बाबा के संग And today बहुत ही मुबारक के साथ बर्थडे मनाएंगे. we will celebrate अपने ही स्थान पर बैठे रहेंगे. birthday with Baba. दादियाँ ही मिलेंगी. First the daddies will meet. And the daddies come and shake hands with Baba first. Daddy Ji and Daddy Janki, they are shaking hands. So, greetings to all of you. And Baba is telling them greetings on your birthday, and Daddy is saying greetings on your birthday too. Congratulations. The great congratulations from all the children to you, Baba. Daddy is saying and hugging Baba. So, Daddy Ji is hugging Baba on behalf of all of you. So, mm, mm, um, mm. So Baba is saying on behalf of all of you, the daddies are hugging Baba. So it's not just daddies alone, but all of you are merged in this big hug. All of you are so happy to see the daddies, aren't you? Daddy is telling all the other daddies, sit down, sit down. Yes, it's all the chairs are coming, the seats are coming, and the daddies are sitting. Why are the daddies loved so much? Because they help all of you by giving you so much love and make you move forward. That is why the daddies are loved so much. This is what is in the heart of the daddies. They have this thought in them that everyone, as he or she is Baba's child, should be seen as someone very elevated in front of Baba. Each one gives help in a gathering. So help, cooperation is also part of yoga. Yes, that is repeating that. Sahyog is yoga. When the daddies feel zeal and enthusiasm in you, at that time, what do you remember? You remember Baba, don't you? So that is yoga, is it not? So when the daddies feel enthusiasm in you, this is also yoga, because at that time you remember Baba. Daddy Janki liked this point very much. She's repeating it. See, you get blessings of so many souls, so many souls. The daddies
get the blessings of so many souls. So you are accumulating blessings for 21 births. So 21 births blessings are being accumulated at this time. Then for 63 births you will have to bless other souls. You are accumulating which will last for 21 births, and then you will be giving. They will remain with you for 21 births, and because in golden age you won't have to bless anyone. Everyone is already blessed there, but from copper age onwards you will have to bless souls. So see the drama, see Baba, and keep saying Wah Baba, Wah, Wah drama, Wah. Yes, is it okay? All the bodies have become old and you are moving along with your old bodies, no? But these old bodies are very valuable. See, all the daddies all have old bodies and they are pulling their old bodies forward. You too feel courageous, don't you, on seeing the daddies? You too feel courage. Baba's telling everybody. You too feel courageous, no? The seeing the daddies, though they are physically so old, but then they have that zeal and enthusiasm in them all the time. So, what's to be done next? And now, after this, the senior brothers will come on the stage. और उसके बाद इन दोनों भाइयों के बाद विदेश की हमारी मुख्य 6 बहनें मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, डॉक्टर निर्मला, जयंती बहन, सुदेश बहन और चक्रधारी बहन और वेदांती बहन मंच पर आ जाए. So Nive bhai, then Ramesh bhai, Karuna bhai, Gopal bhai, all are here to present bouquet of flowers to Baba. Nive bhai is greeting Bap Dada on his birthday after presenting the bouquet. Nive bhai is saying something. The mic is not on the stage. Now Ramesh bhai comes. Invited for candle lighting are requested to come behind the stage. भारतवर्षी जिन्हें केवल कैंडल लाइटिंग येलो रिबन है, ब्लू कलर वाले नहीं, केवल कैंडल लाइटिंग के लिए. और all those who have been invited for candle lighting, they will come. All those who have been invited for candle lighting, that is, they have been given a yellow ribbon, they will come from the backstage. पीछे से आएंगे, स्टेज के पीछे से, आगे से कोई नहीं आएगा. They will come behind the stage, not from the stairs from the stage. They will come behind the stage. So now
the regional heads, the RCOs, they are meeting Bap Dada. All of them are here. Mohini Ben, New York, Dr. Nirmala, Jayanti Ben, Sudesh Didi, Chakradhari Ben, Vedanti Ben, all of them are meeting Bap Dada now. There is no mic on the stage, and therefore I'm not able to translate what Baba is speaking. But I can see everybody nodding their head. Baba is saying beautiful things to them. Probably Moini Ben is now talking about all the plans they have made in their meetings. Also, Vedanti Ben is speaking, maybe talking about the Serve Africa plans. Sister Sudesh has just returned from the hospital. She underwent an operation, and now she is well. कोई हाथ नहीं हिलाएगा, हाथ नहीं हिलाओ, दृष्टि लेंगे. So Bap Dada has come to the periphery of the stage and is giving drishti to all from the stage, and just at the side of the stage is a very big pole on which Baba's flag is kept, and it will be hoisted by Bap Dada maybe at the end of the program. First there will be candle lighting, then cake cutting. So I take leave and invite Suman Ben to continue the further commentary, and a very, very happy birthday to all of you on this great day of Shiv Jayanti. Om Shanti.
It's Dr. Vinay Lakshmi who will now give the running commentary of what's happening on the stage. So good night. Meet you again in the next meeting. Om Shanti. The scene right now is that of Bap Dada on the stage giving drishti. Bap Dada has now reached the pole on which the flag has to be hoisted. He is accompanied by Dadi Ji, Dadi Janki, Muni Ben, Neelu Ben. And Bap Dada is giving a powerful drishti, filling each one with the rays of power. Bap Dada's hand of blessings has just gone up, and each child is rejoicing, treasuring this very valuable, unforgettable, historical moment. All the senior brothers are now standing behind Bap Dada and the Dadis. All the senior sisters have also come. And now Bap Dada is going to hoist the flag. The song of flag hoisting is being played, and everybody's heart is dancing with the song. The flag of revelation, the flag of Bap Dada's birthday is just about to be unfurled. Bap Dada has got the rope in his hand, and there it is unfurled. Numerous petals have come down from the magnificent royal flag, and everybody in the flag is clapping. Some have stood up too. The words of the song are that Shiva's flag is the highest, the greatest, the most elevated. Many flags have also gone up in the hall. Everybody's waving flags. This is that unique flag which brings all the flags together. This is that point of light which is the support of all. Everybody is waving, everybody is clapping joyously, rejoicing at this great moment. Shiva will always be respected. He is the father of all the souls. This is that flag, the highest, the greatest, the most elevated. The echoes of the clapping still go on in the hall. The song has stopped playing. And now
Everybody is fervently waiting for Bap Dada's message, the birthday message. This flag, which has been unfurled, this flag has been hoisted, unfurled for the service of the people. But in your heart, it is the flag of revelation of Bap Dada, which is being unfurled, which always will continue to unfurl in your heart. That flag of God's love, which is waving that in the entire world will spread the vibration of your heart. And such a day has to come, which that the atmosphere of your heart's love will work as a magnet for everyone, and each one will say from their mouth that he has come, our Baba has come. The whole hall is clapping joyously. Bap Dada continues his message. Right now, you're just hoisting this flag, but as time goes by, you will unfurl the flag of revelation. Because each child has a claim on the Father, and the Father has to give some attainment to each child. You will get liberated in this very life, whereas they will be happy with just liberation. You will be happy with Jivan Mukti, liberation in life. You are double. You are living, you have the life as well as liberated. Whereas those people of the world, they will just get freedom or liberation. So like this, so you are the ones who in this way unfurl the flag of the Father in your heart. Congratulations, congratulations, congratulations. And now, after this, we have the program of candle lighting. So in the middle, Bap Dada and Dadis will be standing. On the right side, there will be brothers, and the sisters will be on the left. So now, Bap Dada, along with the Dadis, is going to light the candles in the center of the stage. The song is just playing that it is my birthday. So these are the words of the song which say, it is my birthday, you have come, and suddenly there's a wave of happiness, and there is brightness, light everywhere. So come on, take happiness, each one. Let us all take happiness. Happy birthday. So everybody has got the lighted candles in their hand,
and they're going to light the candles. So Bapdada has just lit the candles, and now the others are lighting the candles. A scene of great happiness. Everybody is clapping their hands. Everybody's face is lit up with joy as everybody is distributing happiness along with Bapdada, who congratulates his children for his birthday and so the children's birthday. All the candles are now lit, and the daddies, Nevabai, Bapdada is giving drishti, and everybody is smiling on the stage. Bapdada has just raised his hand to give blessings to all. Eyes lit up with sheer ecstasy, with love. And now, Bapdada, ओम शांति। अब इसके बाद बाप दादा और दादियाँ अक्षय जयंती के उपलक्ष्य पर केक काटेंगे। and now there will be the cake cutting ceremony by Bapdada and the daddies. ओम शांति। अक्षय जयंती के The whole stage is now full of अवसर पर बाप दादा और दादियाँ केक Baba's काटेंगे। children. जो भी मंच पर खड़े हैं सब पीछे आ जाएं। All are requested to come behind. All those who have been invited are requested to come to the stage to participate in the cake ceremony. A very special cake. A cake which Baba says that we have now to finish off with the wasteful thoughts. A historical moment of the year 2006 when Baba is standing in this diamond house in Shantivan. When Bapdada, after hoisting the flag, is going to get the birthday marking the 70th anniversary of the Yagya. But this is a special cake because it symbolizes also cutting the cake of wasteful thoughts. Om Shanti. Those who are standing on the stage are requested to take your seats back. Please come behind. The cake is huge. We have the letters 70 written on it, and there is an angel in front of a small Shiv Baba's flag stuck on the cake. It is placed on the table, and in front of the table it is written Happy Birthday. Bapdada is smiling, and on his right Dadiji is standing, and behind them both is Nevabai. Besides Nevabai is Sudesh Didi, and now Neelaban gives the knife and
And now the cake is being cut. Baba, Dadi ji, or Dadi Janki ji. So Brother Ramesh and Mohini Ben have also held on to the knife, and the cake is cut. It's a multicolored cake. Perhaps in 5 tiers. The whole hall is resounding with the words of happy birthday to you, happy birthday to Bab Dada, and so to the children. Bab Dada is giving drishti to the cake, full of love. All the Kumaris with their gold crowns, with these sparkling foreheads, because they have this sparkling light in their crowns, they're all waving and clapping. In fact, almost everybody is clapping in the hall, wearing a big smile. And now, Bab Dada holds a piece of cake, and his hand goes to all the corners of the hall, as though to say, it is on your behalf. He takes that piece of cake. More birthday songs are being played now. And now the cake is being taken away. We're now seeing Baba is being taken back to his seat, and now we see that in front of Bab Dada, Ratan Bhai from London, he has come with a bouquet and is greeting Bab Dada. Bab Dada acknowledges it, acknowledges his greetings, and now Dadi Ji is coming closer to sit next to Bab Dada. So on the right side, Dadi Ji is sitting, and on the other side, Dadi Janki Ji is sitting. And I can see the singers who have come to the stage who will be presenting the birthday song to Bab Dada. Whilst they are getting ready, some of the brothers and sisters are walking in a line in front of Bab Dada to take drishti. There is quite a line.
One by one, they move along, receiving that very special, loveful, and powerful drishti from Baba. A few Kumaris are also there, receiving drishti. And now some of the double foreigner sisters, they are coming in front of Bapdada to get drishti. One by one, they're moving along. And now the group who's going to present the birthday song to Bapdada is almost ready. And I think as soon as the line of the brothers and sisters who've come to take drishti comes to an end, they will start their performance. So, one by one, all the sisters are coming forward to receive the drishti. So, and now the Madhurvani group is going to present us a song, and the words of the song that they're going to present are like this, that children say, Baba, happy birthday, and Baba says, happy birthday to you. And now there's a presentation of a huge happy birthday card by Sister Meera to Bapdada. And now Sister Sudha is presenting a huge card. And now there's a group, and now this is Kamlesh Ben, and accompanied by some brothers and sisters, they're presenting a portrait to Bapdada on his birthday. Sister Chakradhari is also there with them. And yet another portrait of Shiv Baba, which is scintillating with light. That's been presented to Bapdada. Bapdada acknowledges, smiles, and gives his hand of blessings. And this is Sister Sharona, and she is presenting a long card rolled up into a number of leaflets, which is just being opened. Quite a long, it's like a train of cards put together.
could be about 5 feet long इस समय ताली जरूर बजाइए, बैठकर or भी आप even झूम more. सकते हैं। बाबा की यादों में स्नेह में झूमे, खड़े होकर के भी। And now Madhurvani group is presenting their birthday song to Bap Dada. This is Brother Atam Prakash, who's presented a bouquet of flowers, rather a basket of flowers, to Bap Dada. The birthday song has just a beginning now by Madhurvani group. From the heart, everybody's lips are saying just one word is, and that word is that my Baba has come. My Baba has come. The earth spoke, the sky spoke. And even the ocean could not hold himself back, and they all said, my Baba has come. Happy, 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 happy birthday. Baba says, and children say, happy birthday. So Baba says, children say, happy birthday. Everybody called out and said, this is it. And the sky also said, this is it. So everybody called out and said, this is it. The sky also said, this is it. This is the support of the heart. This is the star of the eyes. And this one is the star of our eyes. So unique, so detached, and yet so loving, the most loving. This is that companion which has intoxicated the heart. So happy, happy birthday. Baba says happy birthday. Children also say happy birthday. "70 years have passed, and he has overwhelmed us with his eyes. 70 years have passed, and he has overwhelmed us with his eyes. How many wonders he has performed, and he has made us so fortunate." The flowers laughed, the buds smiled. There is indeed a unique color all over because my Baba has come. My Baba has come. So
happy, happy, happy birthday. Baba says happy birthday, and children also say happy birthday. Amongst the birthdays, this is indeed the birthday. This is the birthday which is like a diamond. When the world listens to the true knowledge of Gita, then the world becomes like a diamond. From the little subtle regions, he comes, the ocean of knowledge comes, and he is imbibed by the heart, by the ocean of the heart. My Baba has come, my Baba has come. So happy birthday, Baba says, and children also say happy birthday. Shiva, who is beyond birth, he comes to celebrate his birthday. So Shiva, who is beyond birth, he comes to celebrate his birthday. He comes to hoist his flag and lights the lamp of the world. Look at the atmosphere. Even the rays of even the moon shies away looking at the splendor of this birthday, because my Baba has come. My Baba has come. Happy birthday. Baba says, and children also say, happy birthday. Wherever the reflection of God fell, there the musical instruments started resounding. There was happiness all around, and everyone has started congratulating and greeting each other, both from the country and abroad. They've all become messengers. Everyone he has come to give the message to all, whether from this country or abroad. He has come to give this message. See, my Baba has come, my Baba has come. Happy birthday, happy birthday. Baba says, and children also say, happy birthday. This comes out from the heart. So from the heart, these are the words which are uttered by everyone's lips. There is just this one word, that my Baba has come. My Baba has come. The earth spoke.
the sky also spoke, and even the ocean could not hold himself back, and they all said, "My Baba has come, my Baba has come." So, happy birthday, happy birthday. Baba says, and children also say, happy birthday, happy birthday. And now the bhog is being offered to Baba by Dadi Ji and Dadi Janki. Baba also feeds them, he also gives them toli. And the Madhurvani group is now in front of Bapdada, taking the drishti. They move along. Baba smiles on each one and gives them drishti. And now we can see that Lachuben and Moini and Muniben are both busy because they're sorting out the trays of the bhog. Toli is now going to be distributed in the rest of the hall. Everyone is being requested to be seated in their respective places, and those who are going to distribute toli will hand them the packets whilst each one is sitting in their own place. And now we go back to the stage where Dadi Janki is offering bhog, is feeding Bapdada with a silver spoon. And now Dadi Ji has just टीचर बहनों की तरफ जो बहनें माताएं खड़ी हैं, आप कृपया बैठ जाएं, नहीं तो गेट के पास जाकर के खड़े बैठ जाएं। कोई भी खड़ा नहीं होगा। टीचर्स
बहनें, आप ना आगे बढ़ेंगे, बैठ जाइए। साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो। अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही, गूंज रही, गूंज रही महिमा तेरे उपकार की। आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। पालना साकार की, पालना साकार की। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही के महलों में होंगे, भले ही के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।
बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो ओम शांति। जो भी माताएं बाप दादा को खड़े होकर के देख रही हैं, वह सब बैठ करके ही बाप दादा से मिलन मनाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। बाप दादा आप सबको देख रहे हैं। अभी तो इसके बाद बाप दादा हम सब से
मिल रहे हैं। कोई भी ना बाहर जाएगा, ना कोई खड़ा होगा। हॉल में बिठाने वाले भाई ध्यान देंगे कि सबको बिठा दे, कोई खड़ा नहीं होगा। तेरी आँखों हॉल में बिठाने से पीते हम हैं अमृत प्यार। डायमंड हॉल के सेवाधारी ध्यान दें। बड़ी कृपया जो खड़े हैं भाई बहन उन्हें बिठाने का प्रयास करें। नजर में हो डायमंड हॉल के सेवाधारी कृपया खड़े हो जाएं और जो भाई बहन खड़े हैं उन्हें बिठाने का प्रयास करें। गले की ओम शांति। बाप दादा आप सभी को देख रहे हैं। बाबा की बहुत स्नेही मीठी मीठी भोली भोली माताएं। आप बैठ जाइए, बाबा तो आपको देख रहे हैं। आप खड़े होंगे तो बाप दादा को नहीं देख सकते हैं। कृपया बैठ करके बाप दादा को देखें। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे कृपया ध्यान दें। ताज तुम पूना की विमल बहन जी टाके बहनों की तरफ 1 नंबर गेट के पास पहुंचे। मेरी हॉल के अंदर बैठे हुए ब्राह्मण कुलभूषणों से मेरा निवेदन है कि वो जो टोली खा रहे हैं कृपया पन्नी हॉल में छोड़कर नहीं जाएंगे। टोली खाकर मुख मीठा करें और पन्नी जेब में रखकर ले जाएं। अनुभव बड़ा निराला है। हॉल में आपकी गुनगुनाहट शोर बन गई है। भगवान स्वयं उपस्थित है और आप आवाज कर रहे हैं। कृपया बैठ जाएं और सेवाधारी भाई बहन बिठा दें। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल ने दिल बहनों की तरफ बहनें सेवाधारी जो खड़ी हैं कृपया तुझे बिठा दें। मान लिया। शिवरात्रि पर सारी रात जागरण होता है। उस तख्त पर तू दिलवा उस अगम अगोचर की महिमा में बैठ जाएं। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला। अभी आपके सामने बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाले हैं। कृपया शांति से बैठें। साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम सामने हमारे, तुम पास हो हमारे।
हासिल है हमको बाबा सब शक्तियाँ तुम्हारी। हम उड़ते पंछी जिसमें आकाश हो हमारे। ओ प्राण प्यारे बाबा सदा साथ हो हमारे। तुम सामने हमारे, तुम पास हो हमारे। हर कल्प में मिले हैं, हर जन्म में मिले हैं। हम एक चमन के गुल हैं, कई रंग में खिले हैं। सूरजमुखी सा मनवा हर पल तुम्हें निहारे। ओ
आवाज बहुत जोर से शोर बन गई है। जितना शांत रहेंगे उतना मंच के कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और ये दृष्टि का आदान प्रदान शक्ति से संपन्न कर रहा है। सितारों की दुनिया में रहते बाबा हमारे बेहद हंसी गुलाब भाई अजमेर वाले जहाँ कहीं हो समीप आ जाए मंच के। मीठे वतन में पहुँचे हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे सागर में जैसे नदियाँ मिलती है धीरे धीरे, मिलती है धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है बाबा, तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है बाबा, तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। ऐसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है। अभी बाप दादा के सामने करुणा भाई और भ्राता गिरीश जी लंदन से, शशि बहन स्वर्णिम प्रभात कैसेट का विमोचन करा रहे हैं, रिलीज हो रही है और इसमें बाप दादा के प्यार भरे गीत आपको सुनने को मिलेंगे।
कल ये कैसेट अवेलेबल है कैसेट काउंटर पर। इसी कैसेट का विमोचन हुआ है और ये ब्रह्मा कुमारी शशि बहन की लेखनी से निकले हुए शब्द हैं। बाबा के स्नेह में डूबे हुए ये गीत अभी आपको गिरीश भाई स्वयं अपनी आवाज में सुनाकर बताएंगे कि स्वर्णिम प्रभात का उदय कैसे होता है। आइए गिरीश भाई। नासिक के जो रैली लेकर आए हुए रैली के भाई हैं वो सामने से बाबा के गुजर रहे हैं। प्रस्तुत है आपके सामने स्वर्णिम प्रभात की एक झलक भ्राता गिरीश जी द्वारा। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खरे हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खरे हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहां भी रूप तेरा ही सामने आए। वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए।
बरसाए, रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू मन की आँखों से, हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। नित दिन हर पल पल साथ तेरे मैं मिलन मनाऊं। ख्वाबों ख्यालों में तुझे अपने ही पास में पाऊं। जीवन की हर मोड़ पे तेरा, जीवन की हर मोड़ पे तेरा साथ मैं तो मांगू। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। ओम शांति ऑडियो चैनल की ओर से एक बहुत ही सुंदर कैलेंडर निकाला गया है, जो बाप दादा की प्रत्यक्षता के लिए 24 घंटे चैनल चलता है और ये कैलेंडर 2 साल के लिए है। इसके अंदर दिखाया गया है ओम शांति ऑडियो चैनल से कितने कार्यक्रम समाज को बाप दादा का परिचय देने के लिए चलते हैं। अगर ये चाहिए तो आप लोग साउंड डिपार्टमेंट में रवि भाई से संपर्क कर सकते हैं। इस कैलेंडर का भी बाप दादा के सामने प्रत्यक्षीकरण के लिए उनका आशीर्वचन लिया गया। और अभी अभी बाबा ने युवा परिवर्तन की पुस्तक स्वर्णिम प्रभात पर भी दृष्टि डाली। मन की यही तमन्ना, दिल की है आरज़ू। मन की गुलाब भाई अजमेर से अपने लक्ष्य का ब्राह्मण जीवन के लक्ष्मी और नारायण, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाला चित्र लाए हैं और बाप दादा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बस बाबा तू ही तू, मन की यही जिसमें स्वर्ग के दृश्य के मुताबिक श्रृंगार स्वर्ण से किया गया है। इस लक्ष्मी नारायण के बृहद चित्र में बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू, मन की यही तमन्ना।
सदा कहा है आपने। पहले भी सामने थे, अब भी हो सामने, रहेंगे साथ हम सदा ओम कहा शांति। है आपने। अभी बाप दादा हम सब से विदाई लेंगे। वैसे तो हम चाहते हैं कि बाप दादा के संग ही बैठे रहें, लेकिन जो मंच पर खड़े हैं कोई आगे नहीं बढ़े, सब पीछे ही हटे और सब अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। बाबा तू ही तू, मन की यही तमन्ना। वो पालना वो शिक्षा हम आज भी तो पाए, मधुबन की हर दिशा से आती तेरी सदाएं। सभी भाई बहनें अपने स्थान पर बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं होगा। आप अपने स्थान पर बैठे हुए बाप दादा को देखते रहेंगे। आज भी तो पाए, मधुबन की हर दिशा से आती तेरी सदाएं। बच्चों का प्राण बाबा, नैनों का नूर तू, नजरों के सामने हो, बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना, बाबा आपकी रूहानी नजरों से, पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, इस देह की दुनिया तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार
खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन